Welcome back to channel. I'm doing absolutely fine. So this is the breakdown video of season 2 episode 1 of Euphoria, and अगर आपको season 1 का quick recap देखना होगा या फिर what exactly this show is all about and किस तरीके से season 1 की storyline flow होती है, then I'll just leave the link in the description. कुछ देर पहले मैंने season 1 का recap बनाया था, and every Monday we get to see a new episode of season 2, and Zendaya को इस show के लिए she's got a lot of worldly recognized awards. So because of that, the show is on altogether on a different level now. And season 2 के breakdown, season 2 के episode 1 के breakdown करने से पहले I'll just give a kind of a spoiler free review. अगर अभी तक आपने episode number 1 देखा नहीं होगा तो it is a kind of a different level this year. Last year में हमने जो भी characters देखे थे they have evolved like to a next level. सारे character की जो development है वो भी बहुत अच्छी तरीके से हुई है, and not just that but story का जो एक perspective है, the way in which the cinematography is being kind of shown, जिस तरीके से कैमरा एंगल मूव हो रहा है, एंड ऑल इन ऑल जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है दैट आई हैव लाइक्ड अ लॉट इन दिस स्पेसिफिक एपिसोड बिकॉज बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पूरी स्टोरी नरेट की है, एंड इट इज ऑल टुगेदरली a different level experience, and India में it is available on Disney Plus Hotstar, so you can directly stream it every Monday. So now let's start with the breakdown of episode number 1 of season 2. और स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि वी काइंड ऑफ गेट टू सी मोर अबाउट who's Fesco's grandmother is, and she is really cool. She is doing drugs and a lot of stuff, and जैसे उसकी ग्रैंडमा उसको मिलती है, एंड फेस्को का पूरा बचपन हमें लाइक एपिसोड के पहले देखने मिलता है, लाइक उसे उसका जो भाई था उसे किस तरीके से वो उसकी फैमिली में आई थी, लाइक हिज मदर एंड फादर आर नॉट देयर, लाइक उसकी मॉम खुद उसके फादर को जाके किल करती है, एंड लाइक हिज ग्रैंडमा इज सुपर सुपर सैवेज, एंड वो जो उसका छोटा भाई रहता है वो भी कैसे बड़ा होता है, लाइक ऑल लाइक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड दे बीन डूइंग ड्रग्स, एंड जब भी वो उसकी जो ग्रैंड मदर रहती है वो एक पर्टिकुलर ड्रग डील करने जाती है, तभी उसको गलती से लग जाती है, एंड तभी उसको समझ आता है कि ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, एंड आफ्टर दैट हर grandmother is kind of really ill, and he need at that time Fesco kind of knows that it is going to be his path from here onwards, because he can't just mourn over her, या फिर अभी जो उसका पूरा बिजनेस रहता है ड्रग डीलिंग का उसे और उसके भाई को आगे चलाना होगा, सो इवन इफ दे आर ट्राइंग टू मोर्न बट ही इज बैक इन द गेम नाउ, एंड हमें अभी सीजन 2 की जो पहला एपिसोड है उसमें उसकी फर्स्ट लुक देखने मिलती है फेस्को की कैरेक्टर की जो डेवलपमेंट हुई है, एट द सेम टाइम जो नेट हमारे एपिसोड सीजन नंबर 1 का जो मेन विलन था he is also kind of growing, and at the same time like the way both of them are like जो उसका जो भाई था जिसको अडॉप्ट किया गया था उसको जिस तरीके से उसने बड़ा किया रहता है, तब एक पर्टिकुलर ड्रग डील करके जब वो वापस आता है, and he says that it didn't go that well, तो उसका जो छोटा भाई रहता है वो डायरेक्टली जाके उसको मार देता है, and that was super super surprising. And now we begin with the main episode जहाँ पे both of them are kind of going, and the story picks up right where from we left in सीजन नंबर 1. तो सीजन नंबर 1 में जहाँ से हम लोग ने न्यू ईयर्स ईव की जो स्टोरी लाइन है वो फॉलो की थी, दैट इज दे वर इन द काइंड ऑफ अ जोन जहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी न्यू ईयर्स ईव, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल बी हैपनिंग इन दिस स्पेसिफिक एपिसोड, एंड उसके बाद रू एंड जो जूल्स की रिलेशनशिप रहती है दे आर काइंड ऑफ लेफ्ट ऑन द क्रिसमस ईव, एंड उसके बाद दे आर ऑन टू द नेक्स्ट मिशन, एंड यहाँ पे जाके वो खाली उनको बोलते हैं कि 20 मिनट में काम हो जाएगा, बट डेफिनेटली दैट डजंट हैपन, एंड जैसे उसको पता चलता है वहाँ पे उसको केसी दिखाई देती है उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ, एंड बोथ ऑफ देम आर इन द कार, एंड उसको पता भी नहीं रहता कि वो न्यू ईयर्स है बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड उसको कुछ बोलता नहीं है, एंड शी इज सो डम, एंड बोथ ऑफ देम आर रियली हाई बिकॉज दे आर डूइंग हेरोइन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो लोग जैसे अंदर जाते हैं वहाँ पे उन्हें देख बहुत ही ग्रूसम सीन दिखने मिलता है हमें कि ये जो लेडी है शी इज काइंड ऑफ द मेन ड्रग डीलर, एंड जिस तरीके से वो डील करती है इट इज वेरी वियर्ड, लाइक उसको कोई वायर्ड चाहिए नहीं रहता है, तो शी जस्ट आस्क एवरीवन हु आर देयर इन द रूम to kind of take off their clothes so that she can see whether they are wearing any wires or not, so that she will be very much safe, and उसके बाद उसका जो ड्रग डीलिंग का थिंग है वो चालू हो जाता है, but at the same time लॉरी जो है वो
फेस्को को वो पूछती भी है कि किस तरीके का ड्रग डीलर उसके खुद के भाई को एंड खुद की एक हाई स्कूल फ्रेंड को लेके गई, हु इज जेंडियाज कैरेक्टर हु, तो ही सेज दैट वो एडिक्ट भी नहीं है एंड ही इज लाइक उसका जो भाई है ही इज हिज बिजनेस पार्टनर एंड उसकी जो फ्रेंड है ही जस्ट शी इज जस्ट हर फैमिली। एंड उसके बाद पूरा ओवरऑल में भी न्यू ईयर्स की जो ईव है उसकी झलक देखने मिलती थी यार at this savage party जहाँ पे even though they were kind of breaking up in the New Year's Eve, but again she is going to see Jules का character यहाँ पे and she is just kind of scared to go over there because she is just trying to hide from her. At the same time New Year's Eve पे we get to see Cassie was kind of like ruined, kind of she was kind of high. At the same time she is also kind of worried because Lexi she's her sister after all, so she's kind of worried about her and she just tries to ask Nate's girlfriend ki wo kahan pe hai, but they kind of meet at the store and they kind of both are high, so obviously things go around, they go on a long drive, usko pata bhi nahi chalta, both of them are high and even though they were on in relationship with different people, they were not happy at the same time, so they kind of end up getting together at the same time. Especially girlfriend बाहर खड़ी रहती है and she just knocks the door and a big fussle happens, like किस तरीके से वो like केसी को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, but at the same time we get to see an amazing relationship kind of building up between Fesco and Lexi, which I would definitely love to see आगे जाके and वहाँ पे at the same time Zendaya is kind of trying to hide in the car because she doesn't want to meet with Jules and तभी वो उसे बता देता है कि she just listen to what he's going to say because he is going to just hide her inside that bathtub. So जब भी वो अंदर जाती है at the same time वो उसे कुछ भी टोचन देके वो वहाँ से निकल जाता है and she kind of hides in that bathtub and तभी same time like obviously she is very much on and off, so like whoever are in these rehabs they are always kind of on and off, so they try to stay away from drug but at the same time if they relapse or agar if they are not able to handle that they kind of try doing drugs and इस specific scene में हमने वही देखने मिला कि she went back to the car and she just had something because of which she is not really that well and then she enters into this room where we get to see a new character and at the same time जो वो bathroom में वो अटकी हुई थी वहाँ पे हमें वो भी देखने मिलता है कि वो आगे जाके वो अंदर जाता है उसके साथ वो bathroom के अंदर and at the same time Rue is kind of having a kind of a mild heartache we can see and but she kind of takes out of it because she has a lot of self ways of healing herself and all DIY things that she keeps doing and at the same time वो उसको ट्राई करने की कोशिश करता है, उसका जो फ़ोन रहता है वो बिकॉज उसकी बहन उसको कॉल करती रहती है तो दैट वाज सुपर सुपर ऑकवर्ड बिकॉज वो रूम में वो बाथरूम में जो नेट की गर्लफ्रेंड है शी इज़ देयर अलॉन्ग विद दैट अदर गाय एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू ईदर स्मोक बट एट द सेम टाइम Ru is also having back of the mind thoughts about how Jules is going to take everything and how things would be there with her and they are also building up an amazing relationship between Lexi and Fesco. But at the same time, जो अंदर बाथरूम में होता है दैट वाज वेरी स्पूकी बिकॉज उसको कॉल कर दिया वो कॉल वाइब्रेट होने लगता है एंड शी वाज रियली स्कैर्ड अबाउट दैट बट आगे जाके हमें देखने मिलता है कि वो पर्दा खोल के वो देख भी लेता है कि उसके अंदर वो लड़की है बट शी इज सो रिस्पॉन्सिबल शी बिकॉज बोथ ऑफ देम आर बेस्ट फ्रेंड्स सो शी जस्ट वॉक्स अवे एंड तभी हमें वो पता चलता है कि शी इज काइंड ऑफ आउट बट एट द सेम टाइम शी इज नॉट दैट मच सेफ एज वेल सो केसी का आगे की जो जर्नी हमें बहुत अलग तरीके से देखने मिलने वाली है एट द सेम टाइम लिटरली एवरीवन इज हाई एट द न्यू ईयर्स एंड तभी हमें कैट भी देखने मिलती है शी इज still there with that guy and they're just kind of building up that relationship so जब वो रूम में चली जाती है उसके साथ शी काइंड ऑफ ट्राइज टू ब्रेक अप विथ हिम बिकॉज ही इज हैविंग दैट एथलीट्स फ्यूचर एंड एवरीथिंग बट शी still tries to explain her but because she had this kind of fling with Nate in that bathroom before so Nate is kind of now into Casey and he just tries to like take over him but he kind of tries to bully him but वो उसको बहुत ज़्यादा bully करने की कोशिश करता है but he was not able to do that much and जैसे हम आगे जाते हैं this was amazing scene like both of them try to speak with each other but before they could talk
Fesco has some amazing things in his mind which is definitely going to blow your mind because जो एपिसोड में आके करता है, जो उसकी रिलेशनशिप बिल्ड होने वाली रहती है लेक्सी के साथ, वो पूरा वो चौपट कर देता है बिकॉज उसका जो भाई आ जाता है एंड he just tells both of them that they need to go on another drug deal, so वो आगे जाके वो आगे की डील कर सके। एंड जैसे हम आगे जाते हैं एपिसोड के हिसाब से वी गेट टू सी बोथ ऑफ देम आर देयर। फेस्को एक टाइम पे था, he just takes off his jacket and at the next point where we see he is waiting for him in the car and there was this super no, super 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 amazing music playing because it was New Year's Eve and New Year's Eve होने के बाद जब 12 बज जाते हैं everyone is kind of in their zone. Jules is in a different zone, Nate is in a different zone, both of them are in a different zone at the same time. Cat is in a different zone. Zendaya का जो character Rue है, that is also trying to cope up to what exactly has happened with Hart. And at the same time, she is still wanting to have a conversation with Jules because the way that उनका जो breakup पहले हुआ था, she is not really happy with that and she is still very much into her. तो उससे वो directly जाके बात करती है that whatever happened, she still misses her and like it could really be well if both of them could stay together and she kind of tries to accept that but at the same time जब भी न्यू ईयर्स की 12 o'clock हो जाता है they kind of have this conversation and before we know they were just वो उसको खाली पूछता है फेस्को नेट को कि what is going to be his New Year's resolution, so he said that the last time we had met उसने उसे मारने की धमकी दी थी and exactly वही होता है, he directly starts beating him literally to death and जिस तरीके से वो उसको मारता है उसका पूरा फेस बहुत गंदी तरीके से पिटता है and almost का face is very much destroyed. Just look at his anger, the way he is. Fesco is going altogether on a different track now from here onwards and that is where he is very much surprised because जिस तरीके से उनकी बातचीत हुई थी she was kind of inclining towards him but now I don't know how Lexi is going to take that and that is the end of episode number 1. Alright, so that is it for the breakdown and a quick recap of the episode number 1. Season 2 is finally out and I know I'm very late with respect to the episode. Monday ko every episode आता है but it is better late than never because now I have a breakdown to do on Monday of Euphoria, then on Wednesday of This Is Us and then एक ये भी दिन बचा है which is tomorrow's Fridays which is The Expanse, but Expanse is going to end so I'll be having still 2 shows where I could definitely involve because both of these episodes are super super amazing. This Is Us का final season होने वाला है and Euphoria is altogether really on a next level now. So thank you so much if you are still watching until here. Please subscribe कर देना if you have liked the video and I tried as much as I could to explain it in Hindi but like because it is fiction so I'm not that used to speaking Hindi but I'll try as best as I could to do videos more in Hindi. So thank you so much again if you're watching until here. Please subscribe to the channel if you haven't subscribed it yet and I'll be meeting you in the next video.